Yes, can you see my screen properly and the movement of the cursor? Yes, sir. Okay, fine, fine. Okay, so let's go ahead. So basically, in the last class, we had discussed about this how to make the vehicle vibration analysis in a single degree of freedom. So we had taken a particular case of force damped vibration. Okay, so force damped vehicle free damped. Okay, not force damped. For the force damped, today we will make the analysis. So in the last class, we had discussed about the vehicle vibration in single degree of freedom, and the case where we had selected was the free damped. Okay, so it was free damped vehicle vibration in single degree of freedom system. Okay, so that analysis we had done. So yes, just one minute. So, okay, so let me again unshare this, and I will share that. Okay. So okay, so this was the case we had discussed about this all the analysis for the pre-damped vehicle vibration in single degree of freedom system. So we had discussed about under-damped, or how to make the analysis for the under-damped, over-damped, and the critically damped. Okay, so this was the case, and for the third case, critically damped. Okay, so this is the help of this graph we had done the conclusion. Okay, and this was the case. On the basis of this, we had concluded all these points. Okay, when epsilon is equal to, damping factor is 0, so how can I calculate the this natural frequency? So these are the comments we are drawn on the basis of all this. Okay, so where this is epsilon is less than 1, that means it is under damped case. Epsilon is equal to 1, that means it is critically damped. Epsilon is greater than 1, that means it is over damped. And overall, this what is damping factor? Damping factor is nothing but the ratio of the actual damping coefficient to the critical damping coefficient. So this we had discussed about. Okay, now we'll move ahead to the logarithmic decrement, but before this we will see the methods with the help of which we can make the analysis. Okay, so first we'll go ahead for this. Okay, just so I will now I will share the that okay. Now okay, so we will see how to do the analysis. So three methods are there on the basis of which we can make the analysis. So what are those methods? So first method is the yeah. Yes, Vakar, can you see whatever I'm writing on the screen? Yes, sir. Okay, fine. Okay, so first method is equilibrium method. Okay, this is the equilibrium method. So here we can say, well, what is the main concept behind this? So basically, if um, we have taken this is our spring. The spring is there. Uh, okay, so this is our okay. So now this is the spring. Now I have attached the mass. So if I have attached the mass to that spring, so some extension will be there. This is the mass. Okay, so this is this shows BB. Okay, so there is the deformation, that is delta. Okay, so you Yes. can see this. Hello. Yes, sir. I Yes. can hear you. Okay. Okay. Fine. Fine. Yeah. Okay. So what is this delta? Delta is the static deflection of the spring under the mass.
Okay, and S is the stiffness of this spring. Let us assume S is the stiffness of the spring. Delta is the static deflection of the spring under the mass. Okay, now what we can say here. Okay, I will not go in detail of the for this method. Three methods are there, so just I am giving the overview about this. Okay, so you just go through this the basic concept of vibration. I told you when I started the vehicle vibration, so I talked about all these methods. Just I am giving the overview and I am revising the things. Okay, so I will take the things in short. Okay, so what I can say here, uh, just a minute. Huh. So I can say this upward force, okay, upward force is equal to downward force. Okay, upward force is equal to downward force. So what is this upward force? This upward force is uh, okay. So that is a spring force. So spring force is what? Spring force is the stiffness or spring constant multiplied by deflection. So S is the stiffness and delta is the deflection. Okay, what is this? This is the spring force. Spring force is equal to the product of stiffness or the spring constant and the deflection. Okay, normally we write this as spring force is equal to the spring constant K into X. So in place of K, that is spring constant, or the stiffness, I would take so use the symbol S, and in place of X, I would use a symbol for deflection or deformation as delta. So now it is S delta. Okay, and we normally take the sign minus. Okay, so what is this? And this is what downward force. Downward force में क्या लगेगा? यहाँ पर आपको weight लगेगा. Okay, so mg. So it is equal to mg. Okay, now if we talk about the inertia force, what will be the inertia force? This inertia force will be equal to mx double dot, that will act in the upward direction, and this spring force. Okay, spring force, that is also known as restoring force. This is equal to Sx, that is also acting in the upward direction. ठीक है, inertia force mx double dot, okay, and that is will act in the upward direction. Spring force or restoring force is equal to Sx, that will also act in the upward direction. I've already told you what is this x. X is the displacement. Okay, you were not there in the last couple of lectures. Okay, so I think you है ना, थोड़ा सा आप ये चीज रिवाइज कर लो. ठीक है ठीक है सर। बता. हाँ, ये सारी हाँ। चीजें हो चुकी हैं डिटेल में. ओके, एक्स डॉट क्या है? एक्स डॉट है अपना वेलोसिटी. ओके, एंड एक्स ओके डबल सर। डॉट क्या है? एक्स डबल डॉट है आपका एक्सेलरेशन. हम्म, ठीक है, तो ये है. अब हम क्या करेंगे इसको? नाउ राइट द इक्वेशन. So summation, so we can say the sum of the inertia force and the external force acting on the body in any direction will be equal to 0. This is as per D'Alembert principle. Okay, will apply D'Alembert principles. According to this, the sum of the inertia force and all the external force acting on the body in any direction will be equal to 0. So that means mx double dot plus sx is equal to 0. Okay, now divide by m on both the sides. You will get the equation x double dot plus s by m into x is equal to 0. Okay, so this equation represents the equation of simple harmonic motion. Okay, which is analogous to x double dot plus omega n square into x is equal to 0. Okay,
Now you just compare these equations. This is, let us assume this is equation number 1 and this is our equation number 2. So you just compare these two equations. So अभी compare करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों compare करके? ओमेगा n square is equal to s by m. Compare first equation and the second equation. So we'll get omega n square is equal to s by m. Therefore, omega n, just a minute. Therefore, omega n is equal to square root of s by m. ठीक है, ये हमें मिल गया. तो हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कोई डिराइव कर लिया. ठीक है, अब आप लीनियर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज द सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम. ओके, दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम. अब लीनियर फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा? एफ एन इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एस बाय एम. तो दिस इज अवर लीनियर फ्रीक्वेंसी. इसके बाद आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू the reciprocal of the frequency. So it is equal to 2 pi root m by s. तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया. ये समझ में आया वकार? यस सर. ठीक है, ये बेसिक्स है ना. 3 मेथड्स हैं जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं. देखो, हमने सर्कुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड किया. ओके, दिस इज दिस इज सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज अ टाइम पीरियड. ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया. Okay, now second method we will see. Second method is known as energy method. ये कौन सा था? पहला वाला मेथड कौन सा था? पहला मेथड था इक्विलिब्रियम मेथड. अब दूसरा मेथड है आपका एनर्जी मेथड. अब दिस इज व्हाट इज एनर्जी मेथड? In a conservative system, that means a system with no damping, the total mechanical energy, that is the sum of the kinetic energy and the potential energy, remains constant. Okay, so what is the statement of this energy method? In a conservative system, that means a system having no damping, total mechanical energy remains constant. If I'm saying total mechanical energy, that means the sum of the kinetic energy and potential energy remains constant. Okay, so I can write like this, d by dt differential of the summation of kinetic energy and potential energy is equal to constant. Now what is kinetic energy? Kinetic energy is equal to हाफ एम वी स्क्वायर, है ना. एम के एम वी स्क्वायर, वी क्या है? एक्स डॉट. ठीक है, तो एक्स डॉट स्क्वायर. समझ में आया ना वकार? हाँ यस सर. हाँ है ना. तो ये देखो, ये अपना काइनेटिक एनर्जी आ गया. अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? समवन हैज आल्सो जॉइंड. Okay, yes Jidan, can you hear me? यस सर. Okay, fine. Okay, so we are talking about the potential energy. Potential energy क्या होगा भाई? मीन फोर्स. ओके, देखो, मीन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. mean force divided multiplied by displacement.
Okay, so that is known as potential energy. Okay, अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, देखो मीन फोर्स क्या है, पहले अपना फोर्स 0 है, फिर फोर्स क्या हो जाएगा, S इंटू एक्स. ओके, एस एक्स, स्प्रिंग फोर्स और सॉरी स्टिफनेस और द स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय 2, मीन ले रहे हैं इसलिए. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अपना इतना है. ओके, so we have assumed our displacement as x. ओके, सो पहले इनिशियली फोर्स 0 है, फिर उसके बाद स्प्रिंग फोर्स हुआ एस एक्स, वेयर एस इज स्टिफनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट, इनटू द डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन दैट इज एक्स. इसका मीन लेना है, सो डिवाइड बाय 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स. तो अभी ये क्या आ गया आपका, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एस एक्स स्क्वायर. Now put the value in the above equation. This is equation number 1. Equation number 1 में put करेंगे. We'll put all the values. So we can say d by dt of kinetic energy is what? Half m x dot square plus half sx square. Okay, it is equal to 0. It is equal to 0. Yes, समझ में आ रहा है ना जिद्दन? Yes, sir. Okay, है ना? Okay, I've already told you the common instruction is, okay, if my voice is not clearly audible and if my screen is not clearly visible, okay, so please unmute yourself and please inform me immediately so the corrective measure can be taken. Otherwise, in online mode, it is very difficult to understand whether you are getting proper audio and video quality. Okay, and in case Yes, sir. if you are unable to understand any step, okay, if you have some doubt, okay, so please unmute yourself and please ask the question immediately. Fine. Okay, sir. Okay, sir. Oh, चलिए इसका डिफरेंशिएशन लीजिए, हाफ m, दिस इज अ कांस्टेंट. अब ये है भाई x डॉट स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, 2x डॉट, और x डॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x डबल डॉट. तो ये आ गया. ओके, प्लस हाफ s इज ऑल्सो कांस्टेंट. अब 2x का क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स डॉट, दिस इज द डिफरेंशिएशन, इट इज इक्वल टू 0. देखो ये आ गया. ओके, नाउ this so from this we can directly write. अभी देखो यहाँ से we will take the this as common. We will take this 2 and 2 will cancel out. This 2 and 2 will cancel out. Okay, and x dot is common. Okay, x dot is common, so finally we will divide the equation on both the side by x dot. So finally we'll get the equation as mx double dot plus sx is equal to 0. Okay, so we got the same equation. So from this we will directly conclude, है ना, जैसे हमने यहाँ पे देखो ये इक्वेशन मिल गया अपने को, है ना, ऊपर भी ये इक्वेशन मिल गया था, ये देखो ये, तो सेम इक्वेशन मिल गया. अभी वही इक्वेशन से हम डायरेक्टली कंपैरिजन करके फाइंड कर लेंगे. Okay, so finally I can conclude that from this our natural frequency, that is the circular frequency of the vibrating system, is equal to square root s by m. So we got this expression. Abhi third method to make the analysis, we will see this. What is the third method? The third method to do the analysis is
Rayleigh's method. Okay. So as per Rayleigh's method, the maximum kinetic energy at the mean position. Okay, that means at the mean position means where the potential energy is zero, is made equal to the maximum potential energy at the extreme position where the kinetic energy is zero. Okay, so very simple. What is Rayleigh's method? In the Rayleigh's method, the maximum kinetic energy at the mean position where potential energy will be equal to zero is made equal to the maximum potential energy or the strain energy at the extreme position where the kinetic energy is zero. Okay, so let the motion is simple harmonic. Okay, motion क्या है अपना? Motion is simple harmonic. If it is simple harmonic motion, so we can say small x is equal to capital X sine omega and t. Okay, where x is capital X is the maximum displacement from the mean position. Okay, so I can take the differentiation of this x dot is equal to omega and capital X cos omega and t. Now you just differentiate this again. Okay, so you can write like this. Okay, fine. So we can find the x double dot also. Okay, now if we talk about this x the maximum value. ओके अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा है ना एक्स डबल डॉट भी हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब कॉस ओमेगा एन टी जो है वो 1 हो जाए यानी मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू ओमेगा एन इनटू कैपिटल एक्स ओके नाउ वी विल से काइनेटिक एनर्जी एट mean position is equal to potential energy at extreme position. So this is half m this the half mv square. Okay, so v is this x dot maximum है ना इसका स्क्वायर लेंगे इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन की हो जाएगा हाफ एस एक्स स्क्वायर तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका कैपिटल एक्स रहेगा दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन तो यहाँ से एक्स कैपिटल एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ द साइड तो यू कैन से एम ओमेगा एन स्क्वायर है ना हाफ और हाफ ये भी कैंसिल हो जाएंगे और कैपिटल एक्स स्क्वायर भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू एस so from this you can say omega n square is equal to s by m so you can say omega n is equal to square root s by m in this way we can find तो आप लोगों ने देखा है ना दोनों तीनों मेथड से आइदर बाय रेलेज मेथड और बाय द एनर्जी मेथड or by this equilibrium method we got this expression omega n for calculating the natural frequency or the circular frequency of the vibrating system. Okay, so we can make the analysis of any vibrating system either of either any of this method. Okay, so understood. Yes, sir. Okay. Okay, so now we'll go ahead. Now we'll talk about the logarithmic decrement. Okay, so yes, yeah, and I will stop sharing now.
Yes, Jidan. Sir, he is not in the meeting right now. अच्छा नहीं है क्या? अच्छा अच्छा. Again left. Yes, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. चलो. ओके, अभी हम लोग आगे जाएंगे. So Jidan was there in that lecture. Okay, so I'll go ahead. Now, this was the analysis for the vehicle vibration in single degree of freedom, and we had taken the case of pre-damned. Okay, now this was the conclusion. Yes, Jidan. Yes, sir. Jidan, can you hear? Yes, yes, sir. डिस्कनेक्ट हो गया हाँ था, सॉरी. हाँ हाँ. अच्छा, अभी देखो, ये हम लोगों ने देखो अभी आज मेथड सीख लिए कैसे वाइब्रेटिंग सिस्टम का एनालिसिस करते हैं ना, थ्री मेथड से: इक्विलिब्रियम मेथड, एनर्जी मेथड और रेले मेथड. ओके. और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पूरा डिस्कस कर लिया था ना, vehicle vibration in single degree of freedom system. So I had taken a particular case of free damned vehicle vibration in single degree of freedom system. So we had done the analysis for the three cases, right? Epsilon will be equal is less than 1, that means it is under damped. Epsilon is equal to 1, that is damping factor is equal to 1, that means this is the critical damping, and epsilon is greater than 1, that means it is over damped. Is it okay or not? Yes, sir. ओके. ठीक है, अभी हम लोग एक लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग फोर्स्ड डैम्ड व्हीकल वाइब्रेशन इन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलो, अभी आई एम गोइंग टू शेयर. Yes. So this we had discussed. Now we'll talk about a concept that is known as the logarithmic decrement. So what is this concept? Write down this: logarithmic decrement. Okay, so what is this, the logarithmic decrement? The ratio of two successive oscillations is constant in an underdamped system. Okay, so the natural logarithmic of this ratio is known as logarithmic decrement. ठीक है. तो मैंने क्या बोला? What is the statement of the logarithmic decrement? The ratio of two successive oscillations is constant in an underdamped system, and the natural logarithmic of this ratio is known as logarithmic decrement. Okay, normally it is denoted by delta symbol. Okay, the symbol we use this as delta. Okay, so we can write. मैंने क्या बोला? देखो, दो सक्सेसिव ऑसिलेशन का जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है. ओके, इन अंडर डैम सिस्टम. तो ये हम लिखेंगे. और इसका नेचुरल लॉगरिथमिक ले लिया हमने. इसका हमने नेचुरल लॉग ले लिया, नेचुरल लॉग ऑफ दिस. Okay, so natural logarithmic of the ratio of two successive oscillations in an underdamped system is known as logarithmic decrement. ओके, ये जिधन याद आया xn और xn प्लस वन हमने फाइंड किया था लास्ट टाइम. यस सर. वो बड़ा रुको एक मिनट सर, फॉर्मूला है ना सर, हाँ हाँ लंबा थोड़ा सा. हाँ, हाँ है ना, सेकंड केस के लिए फाइंड किया था, है ना.
Yes, sir. हाँ, x1 x2 x3, फिर हमने xn और xn+1 फाइंड किया था ना, तो ये वही है। तो क्या है, सो बेसिकली xn डिवाइड बाय xn+1 क्या है, द रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव ऑसिलेशन that will be constant in an underdamped system. So the natural logarithmic of this ratio is known as logarithmic decrement, normally denoted by the symbol delta. Okay, so simply we can say natural logarithmic of the ratio of two successive oscillations in an underdamped system is known as logarithmic decrement. So let's see. So it is equal to what? तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा? It is equal to natural logarithmic नहीं है ना, 1 मिनट, natural logarithmic of e to the power epsilon omega n td, ठीक है, याद आया निधन? xn बाय xn+1 यही फाइंड किया था ना, एप्सिलॉन ओमेगा एन टीडी। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? अभी देखो, ये Correct. हमने xn बाय xn+1 फाइंड किया था एप्सिलॉन ओमेगा एन टीडी के बराबर, ठीक है। अब ये हाँ, लॉग और एंटी लॉग ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें वैल्यू मिल जाएगा एप्सिलॉन ओमेगा एन टीडी, ये वैल्यू मिल जाएगा अपने को। सो दिस इज द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो अभी जरा इसको और फाइंड करते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओमेगा एन, अभी टीडी क्या हो जाएगा, टीडी इज 2 पाई बाय ओमेगा डी। ओके, अभी इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओमेगा एन 2 पाई डिवाइडेड बाय, अभी ओमेगा डी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - एप्सिलॉन स्क्वायर into omega n. This omega n and omega n will cancel out. So this we will get as 2 pi epsilon divided by square root of 1 minus epsilon square. So this is the expression. Okay. So delta is equal to epsilon omega n td. एक तो या तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, जस्ट अ मिनट, या तो आप डेल्टा जो है वो ये वाला फॉर्मूला याद रखो। ओके, एप्सिलॉन ओमेगा एन टी डी, और या फिर ये फॉर्मूला याद रखो आप, ठीक है। सो द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड दिस। ओके, वी कैन कैलकुलेट logarithmic decrement. Okay, now we'll go make the analysis for the uh, vehicle vibration in single degree of freedom, and we have selected a case for the forced vibration. Okay, तो इसको देखते हैं, forced damped. Okay, so forced damped vehicle vibration in single degree of freedom. Let's discuss this. Okay, so with this is vehicle vibration in single degree of freedom system, and we have particularly selected a case of forced damped vibration. So the case is, now we are talking about forced damped vehicle vibration in single degree of freedom system. Okay, now you just see, now convert our make a system and show it in a mass spring system. This is a damper
this is a spring, and this is our mass. This is our mass. This spring having some stiffness S, and this is damper dashpot having damping coefficient C. Okay. Now the initial position was represented by BB. Now after applying the mass, okay, and here we have applied some force also. So this force is, let us assume this is F0 sine omega t. Now the earlier position was CC. We have applied some force on the mass. Okay, earlier position was BB. Now we have attached the mass here, and we have applied some force F naught sine omega t. So this mass will occupy the position CC. Its initial position was BB. Okay, now I will draw the free body diagram of this. So draw the free body diagram. So what is the free body diagram of this? Free body diagram of this is, suppose this is my mass M, this mx double dot, the inertia force is acting in upward direction, this spring force in the upward direction, and this is, sorry, this is inertia force is acting in the upward direction, this is the damping force Cx dot acting in the upward direction, this is the spring force Sx acting in the upward direction, and this is the force F naught sine omega t. It is acting in the downward direction. Okay. Now, so what happens? We have taken a mass M that is attached to a helical spring, and this is suspended from fixed support. Okay. So now the damping is provided here in this system with the help of the damper or the dashpot. Okay, so before the mass is set in motion, so BB is the static equilibrium position under the weight of the mass. Now the mass is subject, so we have applied some oscillating force F naught sine omega t. Now the force acting on the mass at any instant is shown by the inertia force acting in upward direction, damping force acting in the upward direction, and the spring force acting in the upward direction. And this F naught sine omega t, this force is acting in the downward direction. Okay, so this is the situation. So basically, what we can say, I can write that the inertia force that is equal to mx double dot. Okay, that is acting in the I will write in full. Okay, this is what inertia force. Inertia force is called mx double dot. It is acting in the upward direction. Now the next is the damping force. This damping force is equal to cx dot, that is also acting in the upward direction, and the spring force, इसको और क्या बोलते हैं, सेकंड नाम इसका क्या है, इट इज आल्सो नोन एज restoring force. It is equal to Sx. It is also acting in the upward direction. Now impressed oscillating force. Impressed oscillating force
that is f is equal to f naught sine omega t. Now the equation of motion will become mx double dot positive, since it is up acting in the upward direction, plus cx dot upwards positive, sx upwards, so positive, and this f naught sine omega t downwards, so negative, and that is equal to 0. I will take this f naught sine omega t on the right hand side, so I can write the equation like this: mx double dot plus cx dot plus sx is equal to f naught sine omega t. So we got this equation. Let us assume this is equation number 1. Okay. Now what is, so we can say the complete solution. Okay, the complete solution we can take, say the complete solution of this equation consists of two parts. One is the complementary function and the particular integral. Okay, so the complete solution of this equation consists of two parts. One is the complementary function and another one is the particular integral. So we'll talk about these parts one by one. We'll talk about the complementary function. So complementary function is equal to x into e to the power minus epsilon omega n t sine omega dt plus phi. So complementary function is equal to capital X e to the power minus epsilon omega nt the sine omega dt plus phi. Okay, this will be the complementary function. Now we'll talk about the pi. So for the pi, okay, this is general mathematics. Okay, so for the pi, let our c by m is equal to a, s by m is equal to b, and f naught by m is equal to d. So we'll put here. अभी देखो, we will divide our first. We have already divided our first equation by m on both the sides. Okay, so you can say यहाँ पर c by m आ जाएगा, यहाँ s by m आ जाएगा, यहाँ पर f naught by m आ जाएगा, है ना, ये m कैंसिल हो जाएगा. तो x डबल डॉट की जगह क्या लिखेंगे? So using the operator d, we are going to use the operator d. So our equation will become d square plus this now ad plus b. Okay, and we'll take out this x outside the bracket and it is equal to small d sine omega t. ठीक है, x डबल डॉट इसकी जगह हमने लिखा डी स्क्वायर, यहाँ पे c बाय m आया, this will be a d and this will s by m, it is b. Okay, और x कॉमन हो गया बाहर, and this is f naught by m is small d. Okay, small d, और ये बचा गया sin omega t. So we got this equation. So for particular integral will be equal to this d sin omega t divided by capital D square plus a capital D plus b.
Okay. Now to solve this will be equal to d sine omega t divided by है ना, डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी। ओके, अभी इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, तो आई कैन राइट लाइक दिस, 1/b माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ए डी इंटू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए डी डिवाइडेड बाय बी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए डी। ओके, दिस, इस फैक्टर से बी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए डी से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यू कैन से बी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए डी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पर प्लस ए डी है इसलिए यहाँ पर माइनस ए डी। यस जी, देन अभी क्या बचा, डी साइन ओमेगा सर। टी। जी सर, हाँ जी, हाँ देन डी। समझ में आ रहा यस है सर। ना, हाँ हाँ सर। है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है ना, जिसे यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते थे, वही है मैथमेटिक्स। यस सर। ओके, यस वकार, यस सर। समझ में आ रहा है ना, हाँ सर। है ना, भाई कोई डाउट है तो है ना, प्लीज आस्क। Okay, it is simple mathematics that you have already studied in second year in the higher mathematics, है ना, how to find complementary function, how to find particular integral, है ना, वैसे ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। हाँ, so can I go ahead? यस सर। Okay, चलो फिर क्या करेंगे हम लोग ये विल मल्टीप्लाई दिस, सो टर्म को इसको थोड़ा प्रॉपर बनाएंगे। इट इज नाउ, इट इज डी को स्मॉल डी। ओके, नाउ इट इज साइन ओमेगा टी अंदर गया एंड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, एंड माइनस ए डी और साइन ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, राइट। नाउ इट इज डिवाइडेड बाय, देखो दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज बी माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए डी होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर डी स्क्वायर। So we got this expression. Now it is equal to d, that is sine omega t b minus omega square, and यहाँ पर जो d है इसकी जगह we will put this as ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी का, तो ये हो जाएगा दिस इज साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का ओमेगा, सो माइनस ए ओमेगा cos omega t divided by b minus omega square whole square minus, okay, this is a d square की जगह हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आई कैन से ए ओमेगा होल स्क्वायर। So we got this expression. Now take this b minus omega square
is equal to r cos phi and this a omega is equal to r sin phi, है ना? ये हमने ले लिया। तो अभी आप r को क्या लिख सकते हो? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको देखो स्क्वायर लेकर के दोनों ही को स्क्वायर लेकर के ऐड कर दो, तो इसलिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, आर स्क्वायर स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1। तो आपका ये आ जाएगा बी माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, डन। ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब इसका जरा हम इसका डायरेक्शन ले लेंगे, तो टेन फाइ था ना, तो मैंने अभी फाइ ले लिया, टेन इनवर्स इधर ही ले लिया। क्या आएगा? वाई पर क्या है जिधन? हेलो, सॉरी सर, देखो टेन क्या हो इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट क्या है इसमें? ए ओमेगा, गया? वाई ए डब्ल्यू स्क्वायर है ना? हाँ ओमेगा है, ओमेगा वो, है ना? तो ए ओमेगा। ओमेगा और ये बी माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वो एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए ओमेगा डिवाइडेड बाय बी माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? यस, यस सर। ओके, ठीक है, गुड। ओके, तो ये समझ में आना जरूरी है। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड कर लिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने वर्क कर लिया। हमने देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड किया और ये हमने रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अभी आप देखो, आई विल टॉक अबाउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी देखो ये हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल तो फाइंड कर लिया। ओके, अभी इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को। ये जो है वैल्यू, आप लोग चलिए आगे बढ़ाइए मुझे मैथमेटिक्स से जो भी है ना, इसके आगे के स्टेप कीजिए। अभी और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसे, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको।
Okay. Yes, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. है ना, तो अभी देखो क्या करना है, देखो ये b माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह ये r cos फाइव ऊपर रखो, और a ओमेगा की जगह r sin फाइव ऊपर रखो इस इक्वेशन में, है ना, इधर पे रखेंगे, फिर वो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। लेट्स सिंप्लीफाई, लेट्स डू दिस. So we can talk about that particular integral is equal to d. r पूरे से कॉमन आ जाएगा, so this will be sin omega t cos phi minus cos omega t sin phi. ठीक है, sin omega t cos phi minus cos omega t sin phi divided by b minus omega square whole square plus a omega whole square. Okay, so we'll do this. अब क्या करेंगे, so we'll write like this d, r का वैल्यू क्या था, r हमने ऑलरेडी फाइंड किया, r is this square root है ना of this factor, so put the value of r here. So this is b minus omega square whole square plus a omega whole square, और ये क्या है, sin a cos b minus cos a sin b, तो ये क्या हो गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin a minus b. तो a क्या है ओमेगा टी, b क्या है फाइ, सो sin ओमेगा टी माइनस फाइ, ऐसा लिख सकते हैं. ओके, और इसको इसको लिखिए b माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा होल स्क्वायर. ओके, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दिस फैक्टर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस फैक्टर, तो एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपने को मिलेगा d डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा होल स्क्वायर इनटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइ. ओके, अभी अपना d जो d हमने क्या लिया था, यहां से देखो d हमने क्या एज्यूम किया है, d इज एफ नॉट बाय एम, है ना, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे d की जगह, है ना, सो विल पुट द वैल्यू लाइक दिस. पुट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए वैल्यूज, यहाँ पर ए बी और डी का वैल्यू पुट करेंगे. देखो ए का वैल्यू हमने क्या लिया था, सी बाय एम, बी का एस बाय एम एफ, और डी का एफ नॉट बाय एम, so we'll put all the values in this expression. करिए, Yes, sir. इसमें वैल्यूज पुट कीजिए डी ए और बी का, D, A और B का. हाँ ये है ना G वैल्यू, is F नॉट by M. A क्या था सर? A, ये है ना हाँ, वैल्यू, A देखो C by N. मिनट. यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया है ना, ये रहा देखो, सी बाय एम इज ए
S by M is V and F naught by M is D. D. Small d. C by M is equal to small a, S by M is equal to small b and F naught by M is equal to small d. अब ये वैल्यूज अपने को यहाँ पर पुट करने हैं ए, बी और डी की जगह. Yes, sir. So F naught by M dot sine omega t minus phi. चलिए लिखते और हैं एफ नॉट बाय एम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा बी बाय एम की जगह एस बाय एम माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए की जगह वैल्यू लिखिए. दिस इज सी बाय एम ओमेगा that is whole square. Okay, and this is sine ओमेगा t माइनस फाइ. ये अपने को मिल गया. अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, है ना. मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको. ओके, ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाई किया. चलो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को. तो विल गेट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर PI is equal to F naught divided by square root of S minus M omega square whole square plus C omega whole square into sine omega t minus phi. So we got this expression. तो ओके सर, हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल ये फाइंड कर लिया. ठीक है. अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपना क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ही लिखा हुआ है हमने. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज दिस. सो दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ओके, एंड दिस इज अवर पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब इन दोनों को ऐड करके हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा. लेट्स सी. So our complete solution is equal to complementary function plus particular integral. So let's see. So small x is equal to capital X e to the power minus epsilon omega n t sine omega dt plus phi plus f naught divided by square root of s
minus m omega square whole square plus c omega whole square into sin ओमेगा टी माइनस फाइव. तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया. Okay, so what they can comment on the basis of this? A damped free vibration represented by the first part, that is complementary function, becomes negligible with time. E to the power, that means as e to the power minus infinity is equal to 0. So the steady state response of the system is then given by the second part only, that is particular integral. Okay, so that means this complementary function. Okay, this complementary function, that is the force damped vibration represented by the first part complementary function becomes negligible as the time increases. So our we talk about this complementary function. So this becomes negligible. How it becomes negligible? With respect to time. Okay, why? As time increases, है ना, increase होते तो infinity तक पहुंच जाएगा, e to the power minus infinity, that is equal to 0. So our steady state response of the system will be given by the second part of the solution, that is particular integral only. So the amplitude of the steady state response is given by, okay, so the amplitude of the steady state response is given by the second factor particular integral, that is f naught divided by s minus m omega square whole square plus c omega whole square. Okay, now we'll divide by s in the numerator and denominator. So we'll get our amplitude value as f naught divided by s divided by square root of 1 minus m omega square divided by s whole square plus c by s omega whole square. Okay, Yes. ठीक है. अब देखो s बाय m क्या रहता है? s बाय m इज, इसको m को नीचे ले आएंगे, s बाय m ओमेगा n स्क्वायर. तो हम जनरली क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? इट विल बी इक्वल टू f naught by s divided by square root of वन माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर. ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर, और इसका अपने को स्क्वायर लेना है. ठीक है ना, हमने m को नीचे लेकर के आ गए. ठीक है, तो ये हो गया s बाय m. s बाय m क्या होता है? ओमेगा एन स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर, तो हमने ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर लिख दिया है. ठीक है, और ये जो टर्म बन रहा है c बाय s, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो मैंने कल आपको जब ये मंडे के लेक्चर में बताया था फॉर्मूला, ये एप्सिलॉन के लिए, डैम्पिंग फैक्टर के लिए, तो उसके बेसिस पे c ओमेगा बाय s की जगह हम लिख सकते हैं, ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा, c बाय s की जगह हम लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन ओमेगा बाय ओमेगा n
whole square. So we got this expression. Okay, so we can say the frequency of the steady state forced vibration is same as that of the impressed vibration. Okay, so phi is the phase lag for the displacement that is related to the velocity vector. Okay, now we can talk about this. So ये जो phi है, ये phi कैसे आएगा? So that will be equal to, that is the 10 phi. So 10 phi is equal to this a omega divided by b minus omega square. ठीक है, ठीक है ना, ये अपना जो आया था फैक्टर, उसके बेसिस पे हम लिख रहे हैं ए ओमेगा डिवाइडेड बाय बी माइनस ओमेगा स्क्वायर. ये मैंने जो आपको बताया था, ये ओमेगा टेन इनवर्स पाई इक्वल टेन इनवर्स ए ओमेगा डिवाइडेड बाय बी माइनस ओमेगा स्क्वायर. अभी ए और बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो अपने को वैल्यूज आ जाएंगे. सो इट इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हो गया सी बाय एम इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय एस बाय एम माइनस ओमेगा स्क्वायर is equal to, so this will be c omega, mm cancel हो जाएगा, it will be s minus m omega square, और m और m cancel हो गया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, है ना. that will be in denominator, in the numerator and denominator. तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? this will be 2 epsilon omega by omega n divided by 1 minus omega by omega n whole square. So we got this as the phase lag. Okay, so the particular solution of the equation of the motion can also be obtained graphically. Okay, so how can we find it graphically? So we'll see this. So graphically, how can we find it? Okay, how graphically, how can we find it? Let's see. Okay, so basically particular solution of the equation of motion can also be obtained graphically. So how can we see the this graphically? Let's see. So let us assume the displacement of the vibrating mass under the action of this simple harmonic force F naught sine omega t. This is what? This is the simple harmonic force. So we have assumed that the displacement of the vibrating mass under the action of this applied simple harmonic force, this is also simple harmonic and lags by the amount phi. Okay, so this lags by the amount phi. So the displacement will be equal to, x is equal to a sine omega t minus phi. If I calculate this velocity, so differentiate this, so this will be a into omega cos omega t minus phi. Okay, so this can be written as omega a, and sine 90 plus theta is cos theta. So I can write sine 90 plus omega t minus phi. So we got the expression for velocity. Now we'll find the acceleration. So it will be equal to, again differentiate this. So this will be equal to minus omega square a sine omega t minus phi.
We got this expression where A is the amplitude of vibration. Okay, what is this? This A represents amplitude of vibration. ठीक है, amplitude of vibrations. Substituting all these values in the expression. So what is the expression? Now we got this as x double dot. देखो हमने find कर लिया. देखो we got ये x double dot find किया, x dot find किया और x ये है. अब ये सब वैल्यूज हम पुट करेंगे एक्सप्रेशन में. अपना एक्सप्रेशन क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस sx इज इक्वल टू f नॉट साइन ओमेगा टी. ये हमारा एक्सप्रेशन है. इसमें आप वैल्यू पुट करो सभी का, वैसे आ जाएगा. ओके ये देखो x डबल डॉट का वैल्यू पुट किया, x डॉट का पुट किया, x का पुट किया. लेट्स पुट ऑल दिस वैल्यूज. So this will be minus m omega square a sine omega t minus phi plus c omega a sine 90, that is pi by 2 plus omega t minus phi. ठीक है. So this is m x double dot plus cx dot हो गया. अब sx करेंगे अपन प्लस s. x का वैल्यू क्या हो जाएगा? a sin omega t minus phi. Okay, and minus force value and minus f naught sine omega t is equal to 0. Okay, so in this way we can express it. Okay, अब इसका वेक्टर बनाते हैं and then we'll put all these values. So finally we'll get the expression as, just simplify this, so we'll get f naught sin omega t, है ना. इनको राइट हैंड साइड में ले गए, m ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा टी माइनस फाइव. ये राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, माइनस सी ओमेगा ए साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस एस ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव is equal to 0. So we got this expression. तो चलो अभी ये हम दिखाते हैं कि how can we show it on the x-axis. Okay, so graphically how can we show it? So basically this is our x-axis. This is our y-axis, and this is our z-axis. Okay, now you just see here. Now we have to show it graphically. So how can I show? Let's see. So this is my force. F naught. Okay, so this F naught is at angle कितने पर है एंगल? तो अभी हम कुछ चीजें और दिखाएंगे इसमें. देखो m
हाँ, अभी एक हम लाइन और बनाएंगे एम, हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर ए। अब एम ओमेगा स्क्वायर ए, दिस इज मेकिंग द एंगल, ओके, इनको एंगल्स के हेल्प से शो कीजिए। तो एफ नॉट और एम ओमेगा स्क्वायर ए, ओके, एफ नॉट और एम ओमेगा स्क्वायर ए के बीच जो एंगल है, दिस एंगल इज फाई, ओके। नाउ द total angle is omega t, okay. So we can say this angle will be equal to omega t minus phi. ये जो एंगल है ये हो गया अपना ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। तो एफ नॉट और एम ओमेगा स्क्वायर ए के बीच कितना फेज लैग कर रहा है, फाई। this f naught, this angle is making, f naught is making angle omega t, so this angle m omega square a, the angle with the x-axis will be omega t minus phi. Okay, now here it is moving with omega, so clear. So now what we can say here, use some other pen. Acha, now you can see here what is going on here. I can show this is c omega a, and this is SA, okay. Now if I extend this, line, so let's talk about the angle. तो अभी ये जो एंगल है, देखो ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस फाइव, और ये जो एंगल है डेट इज दिस इज व्हाट, दिस इज 90 डिग्री, है ना। तो आपका ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल कितना हो गया, देखो ये तो 90 डिग्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके आगे का एंगल ओमेगा टी माइनस फाइव है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाता है, दिस एंगल बिकम्स, okay, this angle becomes, I'll use some different pen, just a minute, okay. So ये एंगल आपका हो जाता है π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, this is the angle and we are talking about this angle, okay. So we have shown this on we have shown all the force on the coordinate system. Now we'll show it on the force polygon. So let's see the force polygon. How can I draw it? So suppose this is A, okay. So m omega square A, so this is the m omega square A, इसके parallel में ले लेंगे scale, take a suitable scale, this much centimeter is equal to this much Newton, so this is what, this is, we are showing m omega square A, this is my point small a, this is m omega square A, okay. Now यहाँ से आपका फोर्स का वैल्यू देखिए, इसके पैरेलल एक लाइन लेंगे प्रॉपर स्केल के तहत. नाउ दिस is my f naught, this is f naught. Now the point is small b. अब ये ऐसे के पैरेलल होगा, दिस इज ऐसे, ओके. पुट द प्रोटेक्टर हियर एंड ओके, एंड draw the parallel line with proper after taking suitable scale.
So this will be your SA. This is what? This is SA. ठीक है. So अभी ये जो है अभी सी ओमेगा ए, यहाँ से एक take suitable scale we have already taken. Just put the protector here and scroll it down to draw the parallel line. So this will be your C omega A. ठीक है. Now up to this m omega square A, and this full is SA. So what about this length? So let us assume this is point C. So this length will be equal to, this total is SA and this is m omega square A. So this distance will be equal to what? कितना हो जाएगा? SA minus m omega square A. ठीक है ना? SA minus m omega square A. We'll write it properly. सर हाँ, ये इधर आपका ये टॉप खत्म होने के बाद एक बार वो लेफ्ट में जो डायग्राम है वापस समझाओगे क्या एक बार? हाँ बताता हूँ मैं. ओके सर. ठीक है. अभी ये देखो, चलो ये वाला डायग्राम इसकी बात कर रहे हैं ना, दिस वन. जी देन. यस सर, वही वाला. Okay, so what is this equation we got? Okay, हमें ये इक्वेशन मिला है फाइनली. ठीक है. अब इसके बेसिस पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो ऑल द फोर्सेस ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम. So this is our x axis, this is our y axis. Okay, so this is f naught sine Yes, sir. omega t. So I have shown f naught here. Okay, and this is making angle omega t with the x axis. ठीक है, ये हो गया. अब m omega square a. So this is m omega square a. This m omega square a जो है कितना एंगल बना रहा है? तो अब ये देखो, ये जो है f नॉट और m omega square a के बीच, let us assume this angle is phi. So that means m omega square a कितना एंगल बना रहा है? This is, the total is omega t, so this will omega t minus phi. तो omega t minus phi आ गया. m omega square a is making angle omega t minus phi. Okay, अभी ये देखो C ओमेगा ए. अब C ओमेगा ए, तो देखो यहां तक है ओमेगा टी माइनस फाइव. अभी मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, तो एक्सटेंड कर दिया तो ये 90 डिग्री हो गया. तो ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, एक्स एक्सिस से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? ये 90 प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव. तो ये एंगल आ गया. तो C ओमेगा ए, ठीक है, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव. अब देखो ये माइनस साइन है ना, इसलिए हमने एक मिनट. इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया है. यस सर. ठीक है, क्लियर ना? सर ये 90 डिग्री प्लस वो किया, मेरे को वो समझा नहीं रहा थोड़ा सा अच्छे से. देखो ये कुछ जो है, ये देखो, ये जो है ये ओमेगा टी माइनस फाइव है, ये एंगल इतना जो एम ओमेगा स्क्वायर ए बना रहा है. राइट राइट सर. अब देखो इससे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ से, एम ओमेगा स्क्वायर ए से 90 डिग्री 90 बना डिग्री करके एक लाइन बना लिया. ठीक है, और फिर ओके मैंने क्या करा, तो ये एंगल क्या हो गया? 90 प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव. हाँ 90 बराबर ठीक है. सर. अब मैं सी ओमेगा ए जो है मैं ये ऊपर बनाता था, लेकिन हो क्या गया, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस सी ओमेगा ए, इसलिए मुझे अपोजिट साइड में बनाना पड़ेगा सी ओमेगा ए. यस सर. ठीक है. अब ये देखो ऐसे क्या है, अब ऐसे जो है, ऐसे एंगल कितना बना रहा है? ओमेगा टी माइनस फाइव. तो मैं ऐसे इधर दिखा सकता था, ऐसे ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर ए को क्लैश करे, मतलब कोइंसाइड करेगा ऐसे. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर ए जो है पॉजिटिव साइड में प्लस, तो इसलिए मैंने इधर बनाया है. ऐसे जो है वो नेगेटिव साइड में, इसलिए मैंने ऐसे को इधर दिखाया है. ओके सर. समझ में आया ना? यस सर यस सर. तो इस तरीके से आई हैव शोन ऑल माय फोर्सेस ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई विल ड्रॉ द फोर्स पॉलीगन. ये वाला जो डायग्राम है ये फोर्स पॉलीगन है. अब फोर्स पॉलीगन हम कैसे बना सकते हैं? टेक द प्रॉपर स्केल, दिस मच सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मच न्यूटन. तो उस तरीके से आई कैन ड्रॉ द फोर्स पॉलीगन.
अब यहाँ पे देखो एम ओमेगा स्क्वायर ए प्रॉपर स्केल के साथ मैंने लिया है ना, टेक सम सुटेबल स्केल, दिस मच सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मच न्यूटन, ठीक है। इसके बाद आप नाउ आई हैव शोन ऑल द फोर्स ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट मींस आई हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो आप क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के हेल्प से डायरेक्टली प्रोटेक्टर की हेल्प से भी फोर्स पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज द रोलर ऑल्सो, रोलर इज द बेस्ट Okay. एंड द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू ड्रॉ द फोर्स पॉलीगन। अब देखो क्या करो आप, एम प्रॉपर स्केल के साथ अभी यहाँ पर रोलर रखा हमने, रोलर को रोल इट डाउन, तो देखो एम ओमेगा स्क्वायर ए, इसके पैरेलल एक अच्छा लाइन सर, ड्रॉ कर लिया विद प्रॉपर नेक्स्ट स्केल। करना है क्या उसको? हाँ जैसे प्रोजेक्टेड व्यू टाइप है क्या ये? हाँ, ये फोर्स पॉलीगन है, फोर्स पॉलीगन, हाँ ओके सर। जैसे मैकेनिक्स में बनाते थे ना फोर्स पॉलीगन, हाँ हाँ हाँ। है ना। स्केल लेंगे प्रॉपर कि जैसे मान के चलो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन, यस सर। है ना। अब जैसे मान के चलो एम ओमेगा स्क्वायर ए, ये जो फोर्स आ रहा है इसका सपोज वैल्यू आ रहा है 1 kg फोर्स, 1 kg फोर्स मतलब 9.81 न्यूटन। तो मैंने एक स्केल ले लिया 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। तो इस स्केल के साथ आई विल ड्रॉ ना, है ना, तो आई कैन शो द मैग्नीट्यूड ये प्रॉपर स्केल के साथ। यस सर। अब डायरेक्शन मेरे पास है तो मैं या तो मैं प्रोटेक्टर से बना लूं, और प्रोटेक्टर से ना बना पाऊं तो आई कैन यूज आइदर ड्राफ्टर और रोलर। समझ में आया ना? यस सर। यस हेलो, सर बराबर। है ना? यस सर आवाज आ रही है। ओके, समझ में आया ना अच्छे से? यस सर। हाँ, कोई डाउट तो नहीं ना? नहीं नहीं अभी क्लियर हो गया सर। ओके, अभी देखो यहाँ पे रोलर रखो, अपने प्रॉपर स्केल ले लिया है, उसके बाद हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे रोलर करो और रोलर को लेते लेते सर स्क्रॉल इट डाउन, तो एक पैरेलल लाइन बना सकते हैं। एम ओमेगा स्क्वायर को हमने एम ओमेगा स्क्वायर ए एक पैरेलल लाइन बना दिया है इस फोर्स के विद प्रॉपर स्केल, इसको पॉइंट दे दिया स्मॉल ए। अब जहां पर ये फोर्स एंड हो रहा है, ओके, आई विल ड्रॉ द अनदर फोर्स इज व्हाट, एफ नॉट। तो अब मैंने क्या किया, आई विल कीप माय रोलर हियर एंड आई विल स्क्रॉल इट डाउन, so where my force m omega square a ends, my force f naught will start. Okay, now let us assume this यस point सर। is b. Okay, now third force is what, third force is my sa. Okay, so I will keep my roller here and roll it down, so where my f naught ends, my force sa will start, so I will draw the force sa here. Okay, now what about the last one, last one is the c omega a. Now I will keep my roller here and roll it down, so where my sa force ends, my c omega a force will start. Okay, इस तरीके से हमने बना लिया, and I will get a closed force polygon in this case. So then, Okay, sir, the next the diagram on the left is not up to scale, but the diagram on the right is to be made on scale. So the diagram of yes, yes, left is kind of like a reference of the diagram, right? तो सर yes, yes, उसकी correct, जो भी लाइंस है वो एक्सटेंड कर सकते हैं जब तक जितना चाहिए अपने को, राइट? correct, correct. जो और लेफ्ट वाला फोर्स है डेडिकेशन। इसमें केवल हमने वी हैव शोन ऑल द फोर्सेस ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली, नो नीड टू टेक स्केल, बट टू ड्रॉ द राइट हैंड साइड फिगर दैट इज फोर्स पॉलीगन वी नीड टू टेक प्रॉपर स्केल। ओके सर, थैंक यू। समझ में आया ना? यस सर यस सर। अभी देखो यहाँ तक का एम ओमेगा स्क्वायर है, ये पूरा जो है वो ऐसे है, तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन लूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इज ऐसे, दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर है, तो ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा ऐसे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है। डन ना? यस सर। चलो, अब हम इसके बेसिस में एफ नॉट लिखते हैं, एफ नॉट लिखो इसके बेसिस पे। क्या हुआ एफ नॉट वकर? यस जिदन, ये देखो, ये एफ नॉट है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, ऐसे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, दिस डिस्टेंस, दिस इज सी ओमेगा ए, से सी में गए, है ना, ये राइट सी सर। ओमेगा ए हो गया। तो एफ नॉट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस का अंडर रूट। यस तो पाइथागोरस थ्योरम सर। हाँ, हाँ ओके। तो एफ नॉट वी कैन राइट एज, एफ नॉट विल बी इक्वल टू
SA माइनस m ओमेगा स्क्वायर A A square होल स्क्वायर प्लस plus C omega C A square. ओमेगा A होल स्क्वायर। ठीक है ना? Yes, sir. तो इस तरीके से हम एफ नॉट फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें से ए आप कॉमन ले लो। अब मैं आगे लिखता हूं, तो टेक ए एस कॉमन, तो यू कैन फाइंड ए स्क्वायर रूट एस माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू एफ नॉट। सो फिर यहां से ए का वैल्यू क्या आ गया? ए का वैल्यू आ गया एफ नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है ना? नाउ विल फाइंड द एंगल। So tan phi is equal to y component, that is c omega, divided by x component, that is s minus m omega square. So in this way we have determined the phi value, that is the direction also. So we have determined the magnitude of this amplitude and the with direction. So fine. So this vector that we have shown in the diagram are fixed relative to one another, and that will rotate with angular velocity omega. अब ये देखो, यही हमने डिटरमाइन किया था। देखो ए का वैल्यू, देखो ए का वैल्यू हमने यहां से डिटरमाइन कर लिया था। ए, ये देखो दिख रहा है? हेलो, इज Yes, इधर? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये देखो ए का वैल्यू यही फाइंड किया था ना हमने, Yes, sir. एफ नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। तो दिस वाज ए। ये देखो ए हमने यही फाइंड कर लिया दूसरे तरीके से ग्राफिकली, ये आ गया ना सेम एक्सप्रेशन, और फाई यही रहने वाला है, 10 फाई आपका, जैसे हमने जो फाइंड किया इससे। ये देखो आ गया ना, सी ओमेगा डिवाइडेड बाय एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. है ना, 10 फाई का वैल्यू पे आ गया। इस तरीके से हमने दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो डन, ओके। So now, so this is how we have done the detailed analysis of force damped vehicle vibration in single degree of freedom system. Okay. Now we'll talk about the next very important concept, that is known as the magnification factor. Okay, we'll talk about this magnification factor. This is very important. Okay, so what is this magnification factor? So the ratio of the amplitude of steady state response to the static deflection under the action of force, any force, let us assume the force is F naught, okay, is known as magnification factor. So what is magnification factor? The ratio of amplitude of the steady state response to the static deflection under the action of some force, that is known as magnification factor. ठीक है? So magnification factor क्या हो गया? चलो डेफिनेशन से देखते हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट रिस्पांस। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या हो गया? इट इज एफ नॉट
divided by square root of s minus m omega square whole square plus c omega whole square. Okay, so this is what? This is the amplitude of steady state response to the static deflection. Static deflection क्या हो जाएगा? F naught divided by S. Okay. So this is known as magnification factor. अब देखो magnification factor मैंने क्या बोला? देखो ये जो factor है ये above factor numerator वाला just a minute. ये जो न्यूमरेटर वाला फैक्टर है ये क्या है? दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स. ओके, और ये क्या है नीचे वाला फैक्टर? दिस इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ नॉट. So what is magnification factor? Magnification factor is nothing but the ratio of amplitude of steady state response to the static deflection under the action of force F naught. This is known as magnification factor. Okay. So अभी इसको just rearrange कर देंगे. Okay, some factors will cancel out and just rearrange this, simplify this, rearrange this. F naught will cancel out. So finally, we'll get the expression as for the magnification factor as, so this magnification factor is equal to S divided by square root of S minus m omega square whole square plus c omega whole square. Okay, now you divide by s in the numerator and denominator. Okay, divide by s in the numerator and denominator क्या हो जाएगा? This will equal to 1 upon one minus m by s omega square plus c by s ओमेगा होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्या रहता है भाई? एस बाय एम क्या रहता है? एम को नीचे ले आओ, दिस विल बी ओमेगा एन, और इसको रीअरेंज करो. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. तो फाइनली इसको है ना रीअरेंज करके लिखो, सिंप्लीफाई करके लिखो, क्या हो जाएगा? Therefore our magnification factor becomes equal to 1 upon square root of 1 minus omega by omega n होल स्क्वायर, है ना, इसका भी स्क्वायर लेंगे, प्लस 2 एप्सिलॉन ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर. Okay, so this expression we got. Okay, we got this expression, Yes, sir. है ना, for the magnification factor. Okay, this is very very important concept. Okay, now we'll make the interpretation for this magnification factor. Okay, so basically the ratio of the frequencies omega by omega n and the damping factor. So magnification factor depends on the ratio of the frequency, that is omega by omega n, and the damping factor, that is epsilon. It will depend on these factors. Okay, so just give me a minute. I will use
I will show the diagram. Okay, now I have shared the screen. Can you see my screen properly? Yes, sir. ओके, है ना। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर देखो हमने ये देख लिया मैग्निफिकेशन फैक्टर, है ना। सो वी गॉट दिस एक्सप्रेशन. Now we know the magnification factor depends on these two factors. From this expression you can see it depends on the ratio of the frequencies, that is omega by omega n, and the epsilon, that is damping factor. Okay, now this is the graph. So what can we say, what can we comment on the basis of this? Can you see the diagram? Yes, sir. So can Okay, you this enlarge it a little bit? now it is Can okay, you zoom, please? Yes, yes. है ना। So अभी देखो ये है, this is a graph showing the variation of magnification factor with respect to the ratio of the frequency, that is omega by omega n. So you can see the variation. अभी ये देखो ये for epsilon is equal to 0, this is the variation. For epsilon is equal to 0.1, this is the variation you can see. For epsilon 0.2, this is a variation. For okay, epsilon is equal to 0.3, this is a variation. And this for epsilon is equal to 0.4, this is a variation. And for epsilon is equal to 1, this is a variation of magnification factor with respect to the ratio of the frequency. So what can we comment on the basis of this? So we can say the plot of the magnification factor against the ratio of the frequency omega by omega n for the different values of epsilon, that is damping factor, that we have shown here in this figure. So you can see here the curve show that as the damping factor increases, that means as the epsilon increases, the the maximum value of magnification factor decreases. Okay, maximum value of magnification factor decreases, and vice versa. Okay, and when there is no damping, that means when epsilon is equal to 0, that means when there is no damping, it reaches infinity at omega by omega n is equal to 1. You can see when no damping is there, when epsilon is equal to 0, when no damping is there, so it reaches to infinity, है ना। ये infinity पे reach करेगा, it reaches to infinity at omega by omega n is equal to 1. ये देखो omega by omega n का value 1 है, तो यहाँ पर it will reach to the infinity value. Okay, it will reach to the infinity value here. Okay, that means when the frequency of the forced vibration is equal to the frequency of the free vibration. Okay, omega by omega n is equal to 1, that means omega is equal to omega n. Okay, so we can say when there is no damping, that is epsilon is equal to 0, so it reaches infinity at omega by omega n is equal to 1. And if omega by omega n is equal to 1, that means omega is equal to omega n. That means when the frequency of the forced vibration is equal to the frequency of the free vibration, and this condition is known as resonance condition. Okay, now we'll talk about the another graph. This is a graph showing a phase change. Okay, that is phi with respect to change in with respect to the ratio of the frequency. Okay, so this graph showing the variation of phase change, that is phi with respect to omega by omega, and that is the ratio of the frequencies. So you can see, okay, this is the variation for epsilon is equal to 0. This is the variation for epsilon is equal to 0.1. This is a variation for epsilon is equal to 0.2. The variation for epsilon is equal to 0.5.
This is the variation. This curve is the variation for epsilon is equal to 1. So this is the variation. Okay, so what can we comment on the basis of this? We can say in actual practice, the magnification factor can't reach infinity. Okay, and why it can't reach infinity? Due to the friction, which tends to dampen the vibration. Okay, so actually the magnification factor can't reach infinity due to the friction, which tends to dampen the vibration. However, the amplitude can reach very high values. Okay, and this one thing we can also observe that irrespective of the amount of damping, the maximum amplitude of vibration occur before the ratio omega by omega n. Okay, reaches unity. Okay, so we can observe that irrespective of the amount of damping, the maximum amplitude of vibration occur before the ratio omega by omega n reaches unity. Okay, that means omega by omega n reaches unity, इससे पहले ही maximum value मिलेगा अपने को. When the in other words we can say when the frequency of the force vibration is less than that of the damped vibration, because when omega by omega n is less than 1, so that means omega will be less than omega n. So that means this amplitude of vibration occur before the ratio omega by omega n reaches unity, or we can say the frequency of the force vibration is less than that of the damped vibration. So this we can comment on the basis of this. Okay, so this we have completed this magnification factor values, right? Okay, so we have discussed this um, free damped vehicle vibration in single degree of freedom system, forced damped vehicle vibration in single degree of freedom system. On the basis of this, we can easily make the analysis for free undamped vehicle vibration single degree of freedom and forced undamped vehicle vibration single degree of freedom and free undamped, okay, vehicle vibration single degree of freedom system. Okay, so when it is free, so okay, so in the similar fashion we can do this, but so what we will do if it is free, so in place of force we will put the force is equal to 0. If we put the force is equal to 0, that means there is no force, that means it is free or natural. Okay, and if we have done the analysis for the damping, so when we have to make it undamped, so that means the damping will be 0. Okay, so C will be equal to 0, damping coefficient. In this way we can make the analysis for this also. Okay, so in this way we can make the analysis for the vehicle vibration single degree of freedom system for any case. Okay, now vehicle vibration in 2 degree of freedom system, this we will discuss in tomorrow's lecture. And okay, so we'll finish it, and then on the I will take extra lecture on Friday from 9 to 10 in offline mode in the college. So we will solve the remaining problems based on it. Okay, so okay, so now we have some time, so let's solve some a few small problems. Okay, so we'll utilize 10-15 minutes for solving the small problems on this. Just give me a minute. Sir, Yes. can you share the PDF of the derivation and the thing we did today in class? Yes. Actually, I will send everything to you by today evening or by tomorrow. Everything in from module 1 and 2. Okay, sir. ओके, तो इसमें ये आ भी जाएगा, ये तो आई मतलब मतलब ये मतलब वो जो सब भेजूंगा देन उसमें ये सब भी चीजें आ जाएंगी. ओके, सो आई विल सेंड एवरीथिंग. Okay, from module 1 and 2.
Okay, just to give me a minute and we'll solve some problems also. Yes, can you see my screen, the problem on your screen? Yes, sir. Okay, so Yes, let's sir. solve the problem. So these are the small and small problems. So some small problems we will solve in today's session, and then tomorrow's lecture I will finish vehicle vibration in 2 degree of freedom, and then remaining problems we will solve on Friday's extra lecture from 9 to 10. Okay, and rest of the things we will complete on Saturday's online lecture. So everything will be completed from module 1 and 2 by this Saturday, that is 22nd. Is it okay? Sir. Yes, sir. Okay. To solve this problem, it is a very simple one. Solve this. So the problem is an automobile having a mass of 2000 kg deflects its suspension springs 0.02 meter under static conditions. Determine the natural frequency of the automobile in vertical direction if the damping is negligible. Okay, so this is the problem. So let's solve this. So how can you solve this problem? We know what is the formula for So this is calculating the omega. example of forced. Yes, This is an example of forced undamped condition, right, sir? yes. Okay, sir. But simply so no, damping is not negligible, that means it is undamped, and we are and some mass is applied. Okay, but we can say the force is not given, so you can't say it is forced vibration. It is general condition of vibration due to the mass of this Yes, sir. 2000 kg. Okay, some deflection takes place, and the value of force is not given, the static force. So the That automobile mass is not considered as a force in this kind of problem, sir. no. The value of force will be given in the problem itself. Okay, so it will be like some this amount of force is exerted on this spring for so and so like that. Yes. So some external excitation force if we are applying. Okay, Okay, so that means it is force vibration, and if the damping is for there, so it will example, be force damped vibration. But here okay, the so damping is example a vehicle negligible. goes to a pothole. Yes, Jadar, can you repeat? So I was saying that, for example, vehicle goes in a pothole, that imparts an external force of so and so to the suspension, which displaces it. ऐसा आएगा क्या sir? Yes. Some external forces there, na. So definitely that value will be given in the problem itself. But Okay, sir. it is not given in the problem. That means we have neglected all those things. Okay, sir. Okay, so here in the problem itself, damping is negligible. So that means it is undamped, and no external force is given. So it is not forced vibration. It is a simple case. It is a free vibration only. Okay, so mass is given and the deflection is given. The damping is negligible. Okay, so just we have to. It is a one-liner problem. Okay, so omega n, it is equal to, what is the formula? It is equal to square root of ना द स्टिफनेस डिवाइडेड बाय मास. स्टिफनेस को कभी कभी हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर के से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टिफनेस या फिर ना स्टिफनेस या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट को.
ओके। सर आपने पिछले लेक्चर में एस बोला था ना, बिकॉज इट वाज सम कोइंसाइडिंग विद समथिंग एल्स, इसीलिए एस लेने बोला था ना आपने। क्या बोला आपने? सर आपने पिछले लेक्चर में एस को एस या लेने बोला था ना, एस, बिकॉज इट वाज के कहीं और यूज हो रहा था। नहीं 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 नहीं, वो मैंने सी के लिए बोला था, सी के लिए। अच्छा, वो सी के सी, लिए था। हाँ सी क्योंकि हमने वहां पे पॉइंट, अभी जब इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने क्या किया था, ए लिया, बी लिया और स्मॉल डी लिया, सी नहीं लिया। सी इसलिए नहीं लिया क्योंकि डैम्पिंग कोफिशिएंट है ना सी। हाँ सर। हाँ, फिर वो क्या है, मतलब वो मिसमैच हो जाता है ना। डैम्प अभी ये जो स्टिफनेस रहता है, स्प्रिंग का स्टिफनेस, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, स्टिफनेस और द स्प्रिंग कांस्टेंट इज जनरली डिनोटेड आइदर बाय एस और के। अभी हम लोग एस लेके ही कर रहे हैं ना इतने टाइम से। आप यस सर, कोई यस भी सर। सिंबल ले सकते हो, आइदर यू टेक एस और यू टेक सिंबल के फॉर रिप्रेजेंटिंग ओके सर। स्प्रिंग स्टिफनेस और स्प्रिंग फोर्स। यस सर, ओके। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका हो जाएगा, जैसे सपोज मैं के ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा एन इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट के बाय एम। ये फॉर्मूला हो गया, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप। ठीक है ना। अभी मैं मतलब इस जनरली हम लोग एस लेके कर रहे थे ना, तो वैसा आप जनरली मतलब वही चीज है, बस आप या तो एस यूज करो सिंबल, या फिर के यूज करो। हम्म। अब अभी देखो के कैसे फाइंड करेंगे, के इज व्हाट, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या रहता है, इट इज इक्वल टू, फाइंड फाइंड करो, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिफ्लेक्शन, ये रहता है ना। यस सर। हाँ, देखो मैं भी लिख देता हूँ इसको। सर इसमें एमएम में कन्वर्ट करना है कि उसको मीटर में रखना है? एक किसी भी यूनिट में करो आप, जिसमें भी करना चाहो, सेम यूनिट होना चाहिए बस। ओके सर। अभी देखो क्या रहता है आपका, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, हम जनरली लिखते हैं माइनस के एक्स। जनरली क्या होता है, मैं पूरी बात ही लिख देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि देखो, this is directly proportional to deflection. Spring force is directly proportional to deflection. So we can say F is equal to, proportional साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट ले लेंगे, बोलो माइनस के एक्स। ठीक है, माइनस साइन क्यों, क्योंकि जो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं, इसको हम सिंबल अलग अलग ले लेते हैं, या तो F इज इक्वल टू आप ले लो माइनस एस, और ये एक्स की जगह मैंने ले लिया डेल्टा। ठीक है, ऐसा ले सकते हैं, है ना, लेकिन मैं अभी के सिंबल लेके चल रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हो लोड। तो के का वैल्यू कैसे आ गया यहाँ से, अगर मैं इससे देखूं, आई कैन से के इज इक्वल टू लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, फोर्स क्या हो गया, ये दिस इज नथिंग बट लोड एंड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, दैट इज एक्स और डेल्टा, यस सर। है ना। कर लो आप अभी। तो इन दिस केस सर उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है कि उसको केजी में रहने देना है? आप देखो बस कैंसिल होनी चाहिए चीजें। ओमेगा एन का यूनिट क्या होगा, दैट विल रेडियन पर सेकंड, यस सर। है ना। तो आपका के क्या आ गया, के आ गया आपका लोड। लोड देखो दैट इज वेट, यानी कि 2000 केजी दिया हुआ है, तो इसको वेट में कर लो, तो जैसे एम जी 9.81 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड बाय डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कितना है 0.2 मीटर्स, तो 0.02, तो के का वैल्यू आ गया। ठीक है, के का वैल्यू फाइंड कर लीजिए कितना आ गया, 981000। 981000 है। यस। ठीक है, अब ये जो भी के का वैल्यू आ रहा है ये फाइंड कर लो, और उसके बाद ये के का वैल्यू जो है ये आप अब इक्वेशन पुट कर दो, डायरेक्टली मास तो दिया हुआ है। सो ओमेगा एन इज इक्वल टू जो भी आपका के का वैल्यू आ रहा है, और मास का वैल्यू ये रख दो आप,
ये 2000 kg के का वैल्यू जो आपने पुट किया, कैलकुलेट किया, उसको इसमें पुट करो और m का वैल्यू आप डायरेक्टली 2000 रख दो, तो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा n। ठीक है, 921 एक मिनट है सर। हाँ, तो क्रॉस चेक करो, ओमेगा n वैल्यू कमिंग इज 22.1472, the unit is radian per second। 22.1472 सर। हाँ ठीक है ना, ये आ गया। 22.1472 रेडियंस पर सेकंड। सर रिगार्डिंग द यूनिट ऑफ के का कोई यूनिट रहेगा क्या? के का रहेगा ना, स्टिफनेस का न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर रखते हैं ना, ठीक है हाँ सर, हाँ बराबर। ठीक है। वही है, वेट इनटू ये किया ना। हाँ, के इज लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यस सर। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन यानी कि न्यूटन पर मीटर। अब देखो यस। इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे करो, यहाँ पे हम m का यूज कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे न्यूमरेटर में यूज कर रहे हैं m को, यहाँ पे डिनोमिनेटर में यूज कर रहे हैं, लंबा हो गया प्रॉब्लम। अगर आपको और यस। सिंपल करना है इस प्रॉब्लम को, तो देखो क्या करो, ये जो ओमेगा n था, ये ओमेगा n की जगह आप क्या कर दो, यहाँ पे आप लिखो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, तो यू कैन राइट लाइक दिस। सिमिलरली है ना, आप ऐसा कर सकते हो, ओमेगा n, हाँ यही करता हूं मैं, ओमेगा n इज इक्वल टू रूट के बाय एम। अब ये देखो के क्या हो गया, के इज लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन यानी कि एम जी डिवाइडेड बाय डेल्टा डिवाइडेड बाय एम। इज इट ओके और नॉट? ये जीदन ठीक है ना, यस सर। के इज लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन यानी कि एम जी डिवाइडेड बाय डेल्टा डिवाइडेड बाय एम, तो ये एम एम कैंसिल हो गया, तो ओमेगा एन क्या आ गया, जी बाय। स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय डेल्टा। ये मैंने आपको कल बोला था ये चीज, यस सर। कि आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड ओमेगा एन इक्वल टू जी बाय डेल्टा। तो इन एक्सप्रेशन के 181। लिए ये के बाय एम की जगह अगर आप ओमेगा यस सर। एन इज इक्वल टू जी बाय डेल्टा स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय डेल्टा अप्लाई करोगे तो आपको और इजी हो जाएगा प्रॉब्लम। यानी अब आप इससे सॉल्व करके देखो, हो गया इसको सर, वो इसमें आंसर आ रहा 9.81 डिवाइड बाय 0.02, इसका स्क्वायर रूट ले लो, यही आ जाएगा आंसर। है। यस सर, ठीक है ना, वही आ है ना, ओके। चलो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो वेरी सिंपल वन, है ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, वन लाइनर। सेकंड प्रॉब्लम, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ a spring mass system is found to be 2 hertz when an additional mass of 2 kg is added to the original mass m. The natural frequency reduces to 1 hertz. Find the value of the original mass and spring constant. ये फाइंड करना है, तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या करेंगे, लेट्स सॉल्व। रहा। So omega n is what, omega n is equal to square root k by m. Okay, and omega n is given as 2 hertz. That means omega n is equal to 2, okay, 2 into we'll multiply this by 2 pi, so 2 pi into 2. Okay, so this is in radian per second. So finally we got omega n is equal to 12.56 radian per second. Why? Because we know since 1 hertz is equal to 2 pi radian per second. Okay, 1 hertz is equal to 2 pi radian per second. So we got the value omega n. Okay, now so we can say omega n 12.56 is equal to square root k by m. Okay, now you put the value
तो यहाँ से आप स्क्वायर रूट के का वैल्यू फाइंड कर लो। स्क्वायर रूट के इज इक्वल टू 12.56 स्क्वायर रूट m. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. समझ में आ रहा है ना? यस, कैन यू Yes, हियर sir. मी? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. ओमेगा Yes, एन sir. इक्वल Yes. स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट के बाय एम है ना। ओमेगा एन 2 हर्ट्ज दिया था, तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। जैसे ओमेगा एन हमने रेडियन पर सेकंड में फाइंड कर लिया। ओमेगा एन इज दिस 12.56 रेडियन पर सेकंड, तो 12.56 इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाय एम। तो हमने इससे स्क्वायर रूट के निकाल लिया। दिस इज इक्वेशन 1. अब क्या है, ये पहले केस में, अब ओरिजिनल मास के लिए ना। Now, when an additional mass of 2 kg is added to the original mass m, the natural frequency reduces to 1 hertz. Now, what will be the value of original mass and spring constant that we have to find? So, अभी देखो क्या हो जाएगा when mass is added. Okay, so m plus, now mass becomes m plus 2. Our mass becomes m plus 2. So, फिर हमारा जो ओमेगा एन है, इस केस में ओमेगा एन जो है वो 1 हर्ट्ज हो गया। वो 1 hertz means it is equal to 2 pi into 1, that is it is equal to 6.28 radian per second. Okay, so we'll put the value omega n is equal to root k by m. So omega n in this case is 6.28 equal to root k. So root k by m. M is m plus 2. So from this we can find the value of square root k. So square root k is equal to 6.28 square root m plus 2. This is our equation number 2. Okay, now you just see here from equation 1 and equation 2, this is equal to square root k, and this is also equal to square root k. So we can equate equation 1 and 2. So from this we can write 12.56 square root m is equal to 6.28 square root m plus 2. So now just simplify this equation. We have only one equation and one unknown, that is m. So just solve this. So from this we can find the value of m. So a calculated value of m is 0.667 kg. We just put the value of m either in equation 1 or equation 2. sir. हाँ सर इसमें हम लोग ने किया क्या, सॉल्विंग ही किया ना बस दो इक्वेशंस का। हाँ, सॉल्व ही किया ना। देखो ओमेगा एन क्या है, ओमेगा एन इज इक्वल स्क्वायर रूट के बाय एम। हाँ ठीक है, ओमेगा एन का वैल्यू क्या दिया है, 2 हर्ट्ज दिया है। हर्ट्ज से हमने कन्वर्ट किया इसको रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि ओमेगा एन का हमको वैल्यू रेडियन पर सेकंड में चाहिए ना। तो कन्वर्जन क्या रहता है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा। जैसे हमने ओमेगा एन का वैल्यू फाइंड कर लिया अच्छा है ना। तो ओमेगा एन इज 12.56 रेडियन पर सेकंड। ओके, तो हमने देखो 12.56 इक्वल स्क्वायर रूट के बाय एम कर लिया। तो स्क्वायर रूट के मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया, इट इज 12.56 इनटू स्क्वायर रूट एम, इज इक्वेशन 1। अब इसमें दिया हुआ है जब एडिशनल मास 2 kg ऐड करेंगे तो, और है ना, ओरिजिनल मास में, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, 1 हर्ट्ज हो जाएगा। हमने क्या किया, मास जब m प्लस 2 हो गया तो अपना फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो गया। तो 1 हर्ट्ज यस मींस 2 पाई इनटू 1 इज इक्वल टू 6.28 रेडियन पर सेकंड। अब इसको हम पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाय m। तो दिस इज 6.28 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के। अब m क्या है, m प्लस 2 हो गया इस केस में, यस सर। है ना। तो स्क्वायर रूट के हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो इक्वेशन 2 हो गया। अब ये भी स्क्वायर रूट के है, ये भी स्क्वायर रूट के है। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैंने इक्वेट कर दिया, इसे मैंने m का वैल्यू फाइंड कर लिया। वी हैव वन इक्वेशन वन अननोन। ठीक है सर हम्म, ये सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग ओमेगा एन वन और ओमेगा एन टू लिख सकते हैं क्या इस चीज को, बिकॉज हाँ मैं उसमें लिख सकते हो ओमेगा में ना, हो गया। जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो आप। ओके सर। इट इज अप टू जस्ट, दिस उसमें इज ही सिंपल कंफ्यूज हो गया था। मैथमेटिक्स। हाँ, so either you put in equation 1
और यू पुट दिस इन इक्वेशन 2, m का वैल्यू है ओके ना। सर। तो ये सपोज इक्वेशन 1 में पुट कर दिया m का वैल्यू हमने 0.667, तो k का वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो यस कैलकुलेटेड सर। वैल्यू ऑफ k इज 105.27 न्यूटन पर मीटर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, डन। यस सर। हाँ चलो हाँ, एक मिनट सर, अल्फा एक्स, यस। यस सर, 105.221 करेक्ट। ठीक है मेरे ना। को 221 आ रहा है सर। हाँ 2 to 1 वो चलेगा इतना तो। ओके सर। ओके, पॉइंट के बाद ना 100 एंड 105.221 है ना। 5 बराबर है, उसका 221 आ रहा है सेकंड पॉइंट में। हाँ हाँ हाँ, वो चलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। एन इंडस्ट्रियल प्रेस इज माउंटेड ऑन अ रबर पैड टू आइसोलेट इट फ्रॉम इट्स फाउंडेशन। इफ द रबर पैड इज compressed by 5 mm by the self weight of the press, find the natural frequency of the system. So very simple है ना, ये भी वन लाइनर ही है। इसमें क्या करना है, ओमेगा एन है ना, लेट्स सॉल्व दिस, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाय एम। बताइए, वन लाइनर ही है। अब इसको हम लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन कर लेते हैं। K is load, that is mg per unit deflection divided by m. So this m and this will cancel. So now this is equal to square root g by delta. ये वैल्यू आ गया आपका ओमेगा एन का। सो ओमेगा एन वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी का वैल्यू क्या है 9.81 डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा इज 5 mm है ना, रबर पैड इज कंप्रेस्ड बाय 5 mm। 5 mm, that means converted in meters, so it is 0.005। तो ओमेगा एन का वैल्यू आ गया, कैलकुलेट कर लीजिए, इट इज 40.4। 7.0497। दिस इज इन हर्ट्ज। 44.294 आ रहा है। कितना? 44.294 आ रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, वो रेडियंस पर सेकंड में है ना वो। रेडियंस पर सेकंड। अच्छा, ये इसका ये है ना, एक्चुअल फॉर्मूला हर्ट्ज रेडियंस पर हर्ट्ज में मैंने सेकंड निकालने कन्वर्ट के बाद किया, में। हर्ट्ज में। हाँ, एक मिनट रुको सर, मैं लिख के देता हूँ ये चीज। हाँ दोनों में करो, मैंने हर्ट्ज में लिख दिया डायरेक्ट आंसर। मेगा एन इज इक्वल टू रूट जी बाय डेल्टा। डेल्टा इज 5 mm by 5.005. Root gives me 44.294. ओके, 9.81 डिवाइड बाय डिवाइड 0.005। बाय पाई करूँ क्या? डिवाइड बाय 2 पाई करूँ क्या? हाँ डिवाइड बाय 2 पाई ना? हाँ हाँ, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया आंसर, इससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। देखो तो हमारा आंसर आ गया 44 पॉइंट 0.294 294। 4। हाँ 2945। दिस इज रेडियन पर सेकंड। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। 1 रेडियन पर सेकंड इज इक्वल टू 1/2 पाई हर्ट्ज। अब 1/2 पाई से इसको डिवाइड कर दो, यस सर। डिवाइड बाय 7.049। कितना आ गया? 7.049 हर्ट्ज सर। हाँ, एक सेकंड मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ऑल्सो सॉल्विंग। यस 7.049 है ना, ये लिखा था ना मैंने, है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था।
हाँ, so therefore omega n is equal to 7.049 7.0497 hertz. Okay, so this is the answer. ठीक है, समझ में आया ना? Yes, sir. हाँ, चलो नेक्स्ट. ये वाला प्रॉब्लम और सॉल्व करो. A spring mass system has a natural period of 0.21 second. What will be the new period if spring constant is increased by 50% and second one when the spring constant is decreased by 50%? 0.21 seconds. Okay, so let's solve. Okay, so the time period is equal to the reciprocal of the frequency. Okay, so it is equal to 1 upon frequency is omega n by 2 pi. So we know the time period is equal to 2 pi by omega. This we know. ठीक है. So we know omega n is equal to square root k by m. Yes, Okay, sir. so from this we have already, है ना, ये मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था तभी डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही बता दिया था इनफैक्ट, लेकिन फिर से एक बार पूरा डेराइव भी कर दिया. 2 pi root m by k. So this is the formula for calculating time period. Okay, now we can say टाइम पीरियड कितना दिया है 0.21 सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय k. तो इससे आप क्या फाइंड कर लिया? अब देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं दिस इज माय आई एम सॉल्विंग लाइक दिस. आप कैसे भी कर सकते हो, है ना. m1 बाय m2, है ना, k1 बाय k1 m1 m2 k1 k2 ऐसा लेके भी कर सकते हो. मैंने किया 0.21 इंटू स्क्वायर रूट k डिवाइडेड बाय 2 पाई. ये मैंने फाइंड कर लिया. तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. ओके, अभी देखो क्या दिया हुआ है, 0.21 सेकंड है ये. नाउ इफ द पीरियड हमें फाइंड करना है, व्हाट विल बी द न्यू पीरियड इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड व्हाट विल टाइम पीरियड इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज बाय 50%. तो चलो पहला सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन, स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज्ड बाय 50%. सो t1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय k1. ओके, सो इट इज इक्वल टू 2 पाई. अभी स्क्वायर रूट m का वैल्यू रख दो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा हुआ है. so it is 0.21 into square root k divided by 2 pi and divided by square root k1, यानी कि इसमें 50% हम इंक्रीज कर रहे हैं k. तो ये इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा, 1.5 के हो जाएगा. इज इट ओके और नॉट? Yes. Yes, sir. है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट m का हमने वैल्यू रख दिया और यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना k जो है, तो हमने 50% अपना स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है ना 50%, इसलिए 1.5 के हो गया. ठीक है, अब देखो ये 2 पाई कैंसिल, स्क्वायर रूट के कैंसिल. जस्ट कैलकुलेट दिस, so we'll get the value. Calculated value is 0.1715 seconds.
Okay, second है time period is decreased by 50%. So the formula is 2 pi root m by k2. Time period is decreased by 50%. So 2 pi, अभी देखो ये स्क्वायर रूट m का वैल्यू रखो, टू पाई स्क्वायर रूट m is 0.21 into square root k divided by 2 pi डिवाइडेड बाय 50% डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 के, ठीक है ना। पहले 50% इंक्रीज हुआ तो 1.5 हुआ था, अब 50% डिक्रीज हो गया तो 0.5 के हो गया। 2 pi विल कैंसिल आउट, रूट के कैंसिल आउट, नाउ यू कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड। दिस इज 0.297 seconds. Okay, so this is सर this is T2. Okay, ये हाँ सर ये जो आपने किया है क्या बोलते 50% ऐड, वो के को एज 1 के कंसिडर करते हैं ना, तो 1.5 ऐड होगा बराबर सर। हाँ सिमिलरली 50 देखो, 50% डिक्रीज पे 1 50% माइनस इंक्रीज, पॉइंट। हाँ करेक्ट, 50% इंक्रीज हुआ इसलिए 0.5 ऐड कर दिया हमने, अच्छा है ना। वैसे ही है ना, मेरे को लगा फिफ्टी कि परसेंट कुछ इंक्रीज अलग हुआ इसलिए इफेक्ट हमने आ रहा वन में 0.5 ऐड कर लिया इसलिए 1.5 हो है। गया। इधर पर सेकंड केस में अच्छा 50% डिक्रीज हुआ तो वन में हमने 0.5 माइनस कर दिया इसलिए 0.5 रह गया, यस सर ओके। ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। तो आप देख सकते हो जब मैंने 50% स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाया देन टाइम पीरियड है 0.1715 सेकंड, और जब मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट 50% डिक्रीज किया नाउ द टाइम पीरियड इज 0.297 सेकंड, तो टाइम पीरियड बढ़ गया अपना। यस सर ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, ये वाला प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करना। There's another one, you can take the picture. Okay, यस सर। ठीक है। अभी ये वाला प्रॉब्लम देखो, determine the frequency of the vibration of the system as shown in the figure A and B. Neglect the mass of the police. ये वाला प्रॉब्लम और कर लेते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम of today's session, then we'll continue the problems in the offline lecture. सॉल्व कीजिए इस प्रॉब्लम को। Circular vibration system. देखो दोनों फिगर है, हमें ओमेगा एन कैलकुलेट करना है, फिर सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन सिस्टम फॉर फिगर ए एंड फिगर बी। चलो पहले फिगर ए के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिगर ए के लिए क्या होगा, Omega n. देखो फोर्स ऑन इन ईच स्प्रिंग कितना है, यहाँ भी डब्ल्यू है यहाँ भी डब्ल्यू है, तो 2W, यहाँ भी 2W है, दोनों ही स्प्रिंग में फोर्स इन ईच स्प्रिंग। ए के लिए पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो Yes sir. फोर्स इन ईच स्प्रिंग is equal to
2w. Okay, now the deflection of the mass m will be equal to what? ये 2 है ना, तो इसलिए 2 times the deflection of spring 1 plus deflection of spring 2. ठीक है, force in each spring is equal to 2w. Now the deflection of mass is equal to 2 times deflection of spring 1, that is delta 1, plus deflection of spring 2, that is delta 2. Delta 2. ठीक है, so it is equal to 2. deflection क्या रहता है? force is equal to a into delta, है ना, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? f by k. तो अभी क्या है? डेल्टा 1, तो f मतलब लोड कितना है? 2w. 2w इज द फोर्स, तो 2w डिवाइडेड बाय, अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k क्या है? s1 है, डिवाइडेड बाय s1 प्लस अभी डेल्टा 2, तो इसका इसमें भी फोर्स दोनों स्प्रिंग में कितना है? 2w, सो 2w डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट सेकंड स्प्रिंग में क्या? s2 है, डिवाइडेड बाय s2. ठीक है, अब w को आप बाहर ले लो और 2 भी बाहर ले लेंगे, तो आपको कह सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 और w mg हो गया, तो 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2. ठीक है, तो ये अपना आ गया वैल्यू. अब ओमेगा एन क्या रहता है? ओमेगा एन का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट जी बाय डेल्टा. पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में. सो ओमेगा एन इज इक्वल टू g divided by delta, that is 4 mg है ना, डिवाइडेड बाय 1 बाय s1 प्लस 1 बाय s2. अब ये जी कैंसिल हो गया, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दो आप, है ना, ये s1 s2, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है? ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s1 s2 डिवाइडेड बाय 4m टाइम्स s1 प्लस s2. So this is the answer for figure 1. 1 by 4. ठीक है, फिगर बी के लिए करो सेम चीज. Okay, so let's do this for figure B. 1 by 2. This was for figure A. Now this is for figure B. अब इसमें देखो, फोर्स इन स्प्रिंग 1, फोर्स इन Spring 1. कितना है? इसे देखो आप, स्प्रिंग 1 में कितना है फोर्स? W ही है ना? Spring 1 में हाँ सर W है. W है. और फोर्स इन स्प्रिंग 2 कितना है? 2W है सर. नहीं, W/2 है ना. Spring 2 हाँ सर W/2 है राइट. W/2. अब देखो, डिफ्लेक्शन of the mass is equal to deflection of spring 1 Yes sir. plus deflection of spring 2. So it is equal to क्या हो गया? लोड पर यूनिट स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यानी ये हो गया W डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? पहले स्प्रिंग का S1 प्लस सेकंड स्प्रिंग के लिए डिफ्लेक्शन, है ना, तो लोड कितना हो गया? W/2 डिवाइडेड बाय है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या? S2. ओके है ये? Yes sir. थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा.
यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अपने को हाफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये हाफ में ही है इधर। आर यू गेटिंग और नॉट? लोड हाफ हो गया है ना। जैसे हमने यहाँ पर देखो क्या किया था, 2 टाइम्स किया था, 2 था तो 2 का बाहर मल्टीप्लाई किया है ना, और लोड भी 2W लिया। आर यू गेटिंग और नॉट? इसलिए 4 टाइम्स हो गया वो इधर के लिए। अब ये क्या है, लोड W/2 है और ये आधा भी हो रहा है, तो यहाँ पर आपको इसके लिए हाफ का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इज इट ओके और नॉट? ठीक है ना? यस यस सर। रीजन, समझ यस में आया सर। ना? यस। ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गया था उसके लिए। हाँ समझ में आया ना? यस सर। हाँ, तो डेल्टा इज इक्वल टू mg, बाहर ले लो, 1/s1, और इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दो। दिस विल बी 1/4s2। सिंप्लीफाई दिस, so we'll get delta is equal to mg 4s2 plus s1 divided by 4s1s2। ये अपना डेल्टा आ गया। तो अभी है ना, दिस द वैल्यू ऑफ डेल्टा। सो ओमेगा n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g बाय डेल्टा। दैट्स इट। तो ये वैल्यू पुट कर दो आप, g डिवाइडेड बाय जो भी डेल्टा का वैल्यू mg 4s2 प्लस s1 डिवाइड बाय 4s1s2। इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो ये g और ये g कैंसिल हो जाएगा और आपको ओमेगा n का वैल्यू फाइनली मिल रहा है स्क्वायर रूट 4s1s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस 4s2 इंटू m। मैंने स्पेस नहीं बचा है, मैं थोड़ा इधर अलग से लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट, पूरा चीज ही लिख देता हूँ। ओके, यस सर। लिख दिया सर। लिख दिया ना? हाँ, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ इसको। येलो से लिखता हूँ। ओके, सो यू जस्ट सी 4s1s2 divided by s1 plus 4s2 टाइम्स m। ये मिल गया। ओके, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, सो दिस इज सो वी हैव सॉल्व दिस वन। ओके, तो चलो एक ये वाला प्रॉब्लम और ले लो एक। हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ये है ना, ये इसको कंक्लूड करेंगे इसके बाद क्लास। ठीक है सर। Okay, so this is what this is the problem. A vibrating system consists of a mass of 50 kg, a spring of stiffness 30 kilonewton per meter, and a damper. The damping provided is only 20% of the critical value. Now we have to determine all these five: the damping factor, critical damping coefficient, natural frequency of damped vibration, logarithmic decrement, and the ratio of two consecutive amplitudes. So let's solve. So first of all, यस write सर। down what is given in the problem. मास दिया है, मास है 50 kg। ओके, स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना दिया हुआ है? 30 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी न्यूटन में हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई, तो 30,000 न्यूटन पर मीटर।
और डैम्पिंग कोफिशिएंट है, डैम्पिंग जो है 20% है, यानी कि C इज इक्वल टू 0.2 cc, क्रिटिकल का 20%, डैम्पिंग कोफिशिएंट इज 20% ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग, यानी C इज इक्वल टू 0.2 cc। ओके, तो अब लेट्स फाइंड फर्स्ट वन। डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है? एप्सिलॉन, यानी कि वो C/cc होता है। तो C/cc यहां से डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं, C/cc इज इक्वल टू 0.2। तो एक ही लाइन में मिल गया हमें। ओके डन, Yes, डैम्पिंग sir. फैक्टर वी हैव डिटरमाइंड। नाउ क्रिटिकल, सेकंड वन, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट फॉर्मूला 2-3 मैंने फॉर्मूले बताए थे इसमें, दिस इज अ सुटेबल वन टू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट SM, लेकिन क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट SM। ये मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, Yes, sir. है ना? तो इसका वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू स्क्वायर रूट S कितना हो गया, इट इज 30,000 इंटू M, ये हो गया आपका 50। 2449, sir. हाँ 2449 सही है, तो करीब आ गया 2450 न्यूटन पर मीटर पर सेकंड, यानी कि 2.45 न्यूटन पर mm पर सेकंड। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. थर्ड वन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, यानी कि ओमेगा डी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन ओमेगा डी का फॉर्मूला क्या रहता है? 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। Yes, sir. अब एप्सिलॉन स्क्वायर, एप्सिलॉन का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, इट इज 0.2, 1 माइनस 0.2 स्क्वायर ओमेगा एन। ओमेगा एन क्या है? अभी ओमेगा एन आई डोंट नो, तो ओमेगा एन के लिए अपने ओमेगा एन फाइंड करना पड़ेगा। तो ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S बाय M। Yes, तो bye. S इज 30,000 डिवाइडेड बाय 50, तो ओमेगा एन कितना आ गया? 24.5 रेडियन पर सेकंड। तो पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन हियर, तो इसका वैल्यू यहाँ रखो 24.5, तो आपको ओमेगा डी आ गया। Bye. Which is equal to है ना? root. कैलकुलेट करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ओमेगा डी, कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट ओमेगा डी एज 24। तो आप देख सकते हो ओमेगा डी इज लेस देन ओमेगा एन। हाँ. ओके, 4.5. अभी फोर्थ है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ये यहीं पर ही सॉल्व करते हैं। सर आपको 4.84 आया क्या? क्या चीज? 4.84 क्या चीज? ओमेगा डी 4.84 आ रहा है क्या? नहीं नहीं 24 अम, लिखा ना मैंने। कुछ तो मैंने गड़बड़ 24 किया. रेडियन पर सेकंड, एक बार फिर से कर लो आप। देखो 1 माइनस 0.2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 24.5 स्क्वायर रूट के बाहर है। अच्छा, राइट राइट राइट, वहीं गलती किया. एक मिनट. हाँ हाँ, ठीक है ना? तो ओमेगा डी 24 रेडियन पर सेकंड आ रहा है, ओमेगा एन 24.5 रेडियन पर सेकंड था, ठीक है? तो यस ओमेगा सर. डी इज लेस देन ओमेगा एन। चलो अभी दो चीजें और बची हैं। एक मिनट सर, इसका मैं हाँ इसका एक टाइम स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं. हाँ ले लो, उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे। हो गया सर. ओके चलिए, अभी लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कर लेते हैं। सो फोर्थ वन,
मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर रहा हूँ, फोर्थ वन। हाँ सर, this कर दो आप, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ ठीक है, फोर्थ वन इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। यस सर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, चले यार, log m1 डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ये आज ही मैंने बताया आपको, है ना? यस सर, 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। अब yes, sir. एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है? 0.2 है, 0.2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.2 स्क्वायर, दैट्स इट। डेल्टा का वैल्यू आ गया, तो डेल्टा इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 1.28। तो दिस इज द आंसर, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आ गया डेल्टा 1.28। अब लास्ट द रेशियो टू, है ना? यस सर। 1.28 हाँ यस सर। लास्ट। हाँ लास्ट दैट रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड सर और उसको कर कुछ लेते हैं। है डेल्टा का? हाँ यूनिट है क्या डेल्टा का सर? नहीं नहीं ना, ओके क्योंकि सर। नहीं क्योंकि इट इज रेशियो ऑफ टू। नेचुरल लॉग हमने लिया है, लेकिन नेचुरल लॉग किसका है? दो रेशियो, मतलब रेशियो का नेचुरल लॉग है। ओके सर। तो रेशियो एक कैंसिल कर देगा ना, इसलिए यूनिट नहीं है। ओके सर। हाँ, नेचुरल लॉग ऑफ xn बाय xn प्लस 1 है ना? It is करेक्ट सर। nothing but the ratio of two consecutive. It is the natural log of the ratio of two consecutive two successive oscillations. यस सर। है ना? Simply we can say the ratio of two successive oscillation is constant in an underdamped system, and the natural logarithmic of this ratio is known as logarithmic decrement. ओके सर। है ना? और in other words we can say natural logarithm of the ratio of two successive oscillation in the underdamped system, it is known as logarithmic decrement. ओके सर। ठीक है, चलो अभी लास्ट कर लेते हैं, रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड। so this is fifth one, so that is the xn by xn plus 1, so it is equal to e to the power delta, यानी e to the power लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, यानी कि e to the power 1.28 जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। e to the power 1.28 क्या आ गया बताओ? एक मिनट सर, e to the power 1.28 और 3.596 सर। 3.596, हाँ ओके, दैट मींस इट इज 3.6। ओके, यस सर। तो इट इज आल्सो यूनिटलेस क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स। यस सर। okay so now so now we will stop here. Okay, so we have solved many problems, okay, as far as the single degree of freedom is concerned. Now in the tomorrow's lecture in, the college will discuss the vehicle vibration in 2 degree of freedom, and then after this on the during the extra lecture on Friday from 9 to 10 in the college in offline mode, we will solve the remaining problem of vehicle vibration in single degree of freedom, and the problems on vehicle vibration in 2 degree of freedom system. ओके सर, थैंक यू Okay. सर। Just give me a minute, so I will download the attendance. Okay, so if you have any doubt, then you can ask, otherwise we can wind up the class. यस सर, वी कैन वाइंड अप द क्लास, थैंक यू सर। Okay, bye. बाय।